Jai Hind cadets and future officers, I welcome you to the online platform of Indore Defence Academy. This is Siddharth. Time is passing by and clock is ticking. As only 1 month is left for your FCAT 1 examination, and I hope your preparation and solving the PYQs and the mock test is going spectacular, my friends. So in today's video, this is the third video of books and authors, and in those previous two videos you have to memorize all those books. They are very important as your exam point of view. Okay my friends, so this is last video. Without any further delay, let's get started. Indian independence era books, Indian freedom struggle books, my friends. These books are very decisive and very important from your exam point of view. The first is Gita Rahasyam and the Arctic Home in the Vedas, which is written by B.G. Tilak, Bal Gangadhar Tilak. He is also known as Father of India Unrest, and he was the big mass leader of Maharashtra of that time. He also started Ganpati Puja in the big scale in the Maharashtra, and he was also called as a Lokmanya. He was with Lal, Bal and Pal. The three trinities are very important as our Indian independence era, and they play a very vital role in giving the independence from the Britishers. Okay, he is a very famous Bal Gangadhar Tilak, and this Gita Rahasya he wrote in jail, the Mandalay jail. He wrote that famous book in jail only. Okay, we never forget what is the contribution of Bal Gangadhar Tilak into our Indian freedom struggle. Coming to the next book, Hind Swaraj, the story of my experiments with the truth. ये बुक का नाम सुना सुना लग रहा है ना my friends? Harijan Navjeevan. This is written by none other than the father of nation, Mahatma Gandhi. Okay, these are famous book of Mahatma Gandhi. These three books are very famous of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born in 1869 at Sabarmati, Gujarat. Okay, initially he went to get the barrister degree from the England. Then he went to the South Africa to practice his law, and from there in 1950 he came back to India in 9th of January. That is also called Pravasiya Bharatiya Divas. In that day, in that year, Mahatma Gandhi came from the South Africa to India. Okay, you have to memorize this book. Third is Glimpse of World History. The Glimpse of World History, and another book is Discovery of India. Discovery of India के नाम से एक धारावाहिक भी आता था 90s में दूरदर्शन पे. इसको किसने लिखा है? None other than J.L. Nehru, the first Prime Minister of India. इन बुक्स में इन्होंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस का भी वर्णन किया है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट बुक, होम एंड द वर्ल्ड. होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, द होम कमिंग, द क्रीसेंट मून, द गोरा. It is written by Rabindranath Tagore, the first Indian who won, even the first Asian non-European man to win the Nobel in 1913 in the field of literature. Yes my friends, literature. गीतांजलि पे उनको नोबेल प्राइज मिला था. ओके, और जो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और जो कोलकाता में इनका घर था, इन्होंने 25 पैसे लीज पे लिया था इसको, शांति निकेतन को. ओके, तो 30 साल के लिए, और फिर उसकी लीज आगे फिर इंक्रीज कर दी गई थी. तो अभी पिछले साल गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर का घर, जिसे शांति निकेतन बोलते हैं, उसकी लीज खत्म हो गई. तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको हम एक म्यूजियम बना देंगे, उस यूनिवर्सिटी को हम एक म्यूजियम बना देंगे, और रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको जोड़ा गया है. किसको? शांति निकेतन को. तो ये भी एक करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर
जिसको अपन शांति निकेतन बोलते हैं, इट इज एडेड इनटू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके. बहिष्कृत भारत, द अनटचेबल्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एंड मोस्ट फेमस बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, which is written by first law minister of India, B.R. Ambedkar. Okay, my friends, he was the architect of Indian Constitution also, and he was the chairman of the drafting commission. Okay, he is the great B.R. Ambedkar. आपको एक फैक्ट बताऊं B.R. अम्बेडकर जी के बारे में. इन्होंने अपने लाइफ में जितने भी चुनाव लड़े, माय फ्रेंड्स, जितने भी चुनाव लड़े, सारे के सारे हार गए. आजकल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आजकल के जितने भी नीचे तबके के पॉलिटिशियंस हैं जो B.R. अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके नाम का इतना गुणगान करते हैं, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए नीचे जो हमारे हरिजन हैं, जो हमारे अनटचेबल्स हुआ करते थे, उनको कभी ये नहीं बोलते कि आप अपना एजुकेशन सुधारिए, आप अपना आर्ग्यूमेंट सुधारिए. वो हमेशा उनका यूज किस लिए करते हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं. और B.R. अम्बेडकर जी का नाम भी लिया जाता है. लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि उस इंसान जिसके नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, एक्चुअली उस इंसान ने कभी कोई चुनाव नहीं जीता, बिकॉज ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस. ओके, दिस वाज शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सो B.R. अम्बेडकर. द सेकेंड इज अनहैप्पी इंडिया, द यंग इंडिया. दीज आर टू बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज रिटन बाय लाला लाजपत राय. ओके माय फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय who established All India Trade Union Congress. Yes, my friends. All India Trade Union Congress and Hindu Mahasabha, which is written by, which is contributed by Lala Lajpat Rai. Okay, and he was died during the Lathi charge when he and his friends and his comrades went to oppose the Simon Commission. He was Lathi charged by the Britishers and he left his body on that particular day at Lahore. He was the great Lala Lajpat Rai. Seventh book is Life Divine. Life Divine, Essay on Gita, The Future Poetry, and The Savitri. These books is written by Shri Aurobindo Ghosh. Okay, there is a book called Vande Mataram, which is also written by him. Integral Yoga, he started a new practice called Internal Yoga, which was very popular on that time. He also wrote the Ishopanishad, and the prophet on, he is called the prophet of Indian nationalism. Okay, my friends, and he died in the Pondicherry. He led a very successful life, my friends, and there are a lot of Aurobindo ashrams in India, and they used to practice that integral yoga. अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अमृत बाजार पत्रिका का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है माय फ्रेंड्स. इसको किसने लिखा है? शिशिर कुमार घोष ने. इसको किसने लिखा है? शिशिर कुमार घोष ने. इन्होंने एक और बुक लगी है इंडियन स्केचेस. ओके, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है. लेकिन अमृत बाजार पत्रिका वॉज अनमैचेबल, अनडाउटेबल. बहुत सारे लोगों ने अमृत बाजार पत्रिका को पढ़ के काफी इंस्पायर हुए और देश के लिए अपनी जान देने के लिए वो मैदान में कूद गए. नाइन्थ इज पाथेर पांचाली. पाथेर पांचाली इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक. विभूति भूषण, रिटन बाय विभूति भूषण. इनको साहित्य सम्राट भी कहा जाता है. साहित्य सम्राट भी इन्हें कहा जाता है. और इन्होंने एक और बुक लिखी है, एक और पत्रिका लिखी है जिसको कहा जाता है वंदे मातरम. 10th आनंद मठ. आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद चैटर्जी. आनंद मठ के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो वंदे मातरम है, जो हमारा राष्ट्र गीत है, वो आनंद मठ से ही लिया गया है, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद चैटर्जी ने. ये 2nd, 9th और 22nd प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. ओके, he is a very important personality as per the Indian independence struggle. Okay, 11th is Godan, Gaban,
Rangbhumi, Karmabhumi is written by Premchand. Premchand is very famous author, very famous lyricist, and these books are very important from the exam point of view, my friends. And his last novel was Mangal Sutra, which unfortunately was not completed by Premchanda, and he died on the midway. 12th, this is very, very important. Poverty and Un-British Rule of India. The Poverty and Un-British Rule of India is written by Dada Bhai Nauroji. This is written by Dada Bhai Nauroji. He was the first MP in the United Kingdom's Congress. यूनाइटेड किंगडम की जो लोकसभा है, इसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है. तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज द एमपी फ्रॉम द इंडिया. Okay, my friends, and he chaired many times as a Congress president. Broken Wing, Golden Threshold, Sarojini Naidu. Broken Wing and Golden Threshold, these are very important books as written by the Sarojini Naidu. She is also called Nightingale of India. And she is the first woman Indian president who was the Congress president. First lady as a president was Ma'am Annie Besant. Okay, and she was also a part of second round table conference from the part of Congress. Okay, another book, a very famous book of Sarojini Naidu is Bird of Time. So you have to memorize it. 14th, Neel Darpan, Deen Bandhu Mitra. It is written by Deen Bandhu Mitra. This is very important book. It is all about the indigo plantationers. जो इंडिगो की खेती करते थे, जो नील की खेती करते थे बिहार में, जिनको अंग्रेजों ने विवश किया कि आप नील की खेती करिए, और उसमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का ही फायदा था. और इसी के चलते महात्मा गांधी को चंपारण जाना पड़ा, जिसको अपन चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं. द इंडियन स्ट्रगल रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस, हु वाज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया. फ्रॉम हिज स्ट्रगल्स इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ओके, एंड ही वाज द फेमस Army General of Azad Hind Fauj. Okay, Subhash Chandra Bose. He also passed the Indian Civil Services examination of that time. Why I am atheist is written by Sardar Bhagat Singh in jail. Why I am an atheist, written by Sardar Bhagat Singh. Very important book. Planning in India, M.N. Roy. M.N. Roy is a father of CPI, Communist Party of India. He established the Communist Party of India. Okay. Wealth of Nations. This is a father of economics, Adam Smith. He wrote this famous book, Wealth of Nation. The Voice of Freedom, written by Motilal Nehru. He was the father of Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, he was the father of Pandit Jawaharlal Nehru, and his father was Gangadhar Nehru. Okay, and he co-formed the Swaraj Party. Okay, he co-founded the Swaraj Party. Hindutva, the war of Indian independence. The Hindutva and the war of Indian independence. V.D. Savarkar. We know him as the hardcore revolutionarist, and he also went into the rigorous punishment at the hellish place which is called the Port Blair. Okay, the cellular jail. Okay, he wrote that book at cellular jail, which is called the War of Indian Independence. 21, India for Indians, which is written by Chittaranjan Das. चित्तरंजन दास को अपन देश बंधु भी कहते थे. उनका जो निक नेम था वो देश बंधु था. ओके. 22nd is Religion and Culture.
Religion and Culture, Indian Philosophy, Dr. S. Radha Krishnan. ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन. ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वी ऑल्सो कॉल्ड हिम सर्वपल्ली. सर्वपल्ली. ओके. 23rd is Gulamgiri. This is very famous book, my friends. Gulamgiri, which is written by Jyotiba Phule. Which is written by Jyotiba Phule. He worked from the downtrodden peoples of the society. And his wife laid a first girls' school at Pune. Savitri Bai Phule. She laid the first girls' school at the Pune. And she was precursor of the women education in India. Savitri Bai Phule. 24th, Bandi Jeevan. Bandi Jeevan. This is very famous book. I had read it and it was tremendous book. You can add into your bucket list. Bandi Jeevan, written by Sachin Sanyal. Sachin Sanyal was a mentor of Bhagat Singh, Rajguru and the other revolutionaries. With Ras Bihari Bose, he threw the bomb into the Viceroy Hardinge. Okay, he was sent twice to the cellular jail of the Port Blair. He was the great revolutionary, my friend. He was the great revolutionary. 5th, India Divided. The first president of India, Rajendra Prasad, authored India Divided. This book. Samvad Kaumudni, Mirat ul Akhbar. Mirat ul Akhbar. Samvad Kaumudni is written by Indian Resonance Raja Ram Mohan Roy. राजा राम मोहन रॉय. माय फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा नाम है. इनको कुल 8 तरह की भाषाएं आती थी और जब ये छोटे थे तो इनकी चाची को सती कर दिया गया था इनके चाचा के साथ. सती मतलब अपने जब चाचा जी की डेथ हुई तो उन्हीं की चिता में इनकी चाची को भी लिटा दिया गया और वो चिल्लाती रहीं, चीखती रहीं. तो उस चिल्लाने और चीखने से इनके दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने ये प्रण लिया, ये ओथ ली कि मैं सती प्रथा को इंडिया से खत्म कर दूंगा. और जब वो बड़े हुए उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत स्ट्रगल किया, अपनों से लड़ाई की, तब जाकर के इंडिया से सती प्रथा खत्म हो गई. ऑफिशियली अंग्रेजों ने ये नियम पारित कर दिया कि अब सती प्रथा नहीं की जाएगी. अगर कोई करता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है राजा राम मोहन रॉय की, संवाद कौमुदनी. सत्यर्थ प्रकाश. दिस इज रिटन बाय द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, दयानंद सरस्वती. कभी कभी आपके एग्जाम में दयानंद सरस्वती नहीं लिखा रहेगा, मूल शंकर लिखा रहेगा. तो उनके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर. तो आप उनको मूल शंकर से भी याद रखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती से भी याद रखेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. 28th, ए नेशन इन मेकिंग. अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द राष्ट्रगुरु. ओके, और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन. ओके, लास्ट अबुल कलाम आजाद ने लिखी इंडिया विंस फ्रीडम. इंडिया विंस फ्रीडम. ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड ही led a lot of talks with Britishers to get the independence with J.L. Nehru, B.R. Ambedkar and all and C. Rajgopalachari. Okay, so he was very famous personality who keeps the hold into the Indian freedom struggle. That's all for the book and authors series. We are completing it and you have to memorize each and every book which are very important as a point of view. Even a single mark count into your FCAT examination, my friends. You have to fight for your every single mark into the examination. Okay, so these books, all these 3 series book will help you to clearing your examinations. Stay tuned to the Indore Defense Academy YouTube channel and please subscribe to the channel. You are not subscribing it, guys. You have to subscribe it, you have to share and you have to like the videos. All the teachers of the Indore Defense Academy doing a very hard work so that you people get the uniform of Indian Air Force, Indian Army and Indian Navy. So you have to give a little contribution, that you have to like, subscribe and share this informative video
to the people who really need it. Seeing you into the next video. Stay healthy, stay fresh. Jai Hind.